We Are the Music Makers, written by Arthur William Edgar O'Shaughnessy. I will explain it in English and then in Hindi. So let us begin with the questions: when, why, and where. So the poem was published in 1873 under the title Ode. Do you know ode? Ode is basically a form of poetry in which we give tribute to someone. So the poem "We Are the Music Maker" is like a tribute to all the artists in this world. The word "we" in the title suggests a collective voice of all the artists, and the music makers are basically the person who creates music in the life of a human being. So let us start. We are the music makers, and we are the dreamers of dreams, wandering by lone sea breakers and sitting by desolated streams. Here we is referring collecting voice of all artists, and the music makers are the one who fills human life with music. So so here it is saying we are the music makers and we are the dreamers of dream. Dreamers are dreams basically means they are the person whose dreams are built upon their imaginations. Basically they are dreamers of dreams because they can write their dreams on paper. Wandering by lone sea breakers and sitting by desolated stream, the artist alone sit on sea breakers for hours, glaring waves, or you can say flow of water, to form a good poetry. Here the poet is saying that the poets are wandering alone near the sea and they are sitting beside the oceans, or you can say streams, to write a good poetry. World loser and world forsakers, upon whom the pale moon gleams, yet we are the movers and shakers of the world forever it seems. Here in these lines, artists are considered to be word losers and forsakers. They do not get themselves involved in materialistic things and do not get materialistic comfort. They only want to enjoy their life in isolation, which is considered as suitable for them as they have to form a good poetry. So, word loser and word forsakers, I guess you understand, upon whom the pale moon, upon whom the pale moon gleams. Pale moons is basically dull, it is not bright, and gleams basically means appears. So, they used to sit under a dim moonlight and spend their life. Yet, they are mover and shakers of the world because a poetry, or you can say art, never dies. You have often heard the proverb, "A pen is mightier than a sword." So, here you can understand by the proverb that the artist or the poet who prints or who writes his or her dream on a paper have the power to move or shake the whole world through their art. तो चलिए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। वी आर द म्यूजिक मेकर्स एंड वी आर ड्रीमर्स आर ड्रीम्स। हम लोग आर्टिस्ट हैं जो आर्ट बनाते हैं, तो हम लोग कलाकार हैं जो कला बनाते हैं। एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स, और हम ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों के सौदागर हैं। हम लोग अपने सपनों को पेपर में उतार सकते हैं। हम लोग नदियों, झरनों के आसपास घंटों घूमा करते हैं, झरनों के बगल में बैठते हैं और जो लहरें उठती हैं उनको देखते रहते हैं ताकि हम लोग एक अच्छी पोएट्री फॉर्म कर सकें। वर्ड लूजर्स एंड वर्ड फॉरसेकर्स, ये दुनिया हम लोगों को लूजर्स कहती है, दुनिया हम लोगों को कहती है कि इनसे कुछ नहीं होगा, ये लूजर हैं, लेकिन हम खुद ही मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं आना चाहते, हम दुनियादारी में नहीं पड़ना चाहते। हम दुनियादारी से दूर एकदम अकेले आइसोलेशन में
अपनी पोएट्री या अपनी आर्ट को फॉर्म करना चाहते हैं। वी आर द म्यूजिक मेकर्स, हम लोग हैं जो डिम सनलाइट के नीचे घंटों तक बैठे रहते हैं और फिर भी हम लोग भले ही लूजर्स हों, लेकिन हम लोगों के पास इतनी पावर है, हम लोगों के कलम में इतनी ताकत है कि हम लोग पूरी दुनिया को हिला सकते हैं अपनी आर्ट से। With wonderful deathless ditties, we build up world's greatest cities, and out of a fabulous story, we fashion an empire's glory. Here, deathless is basically the thing which is not going to die, or you can say immortal. Here, in the second stanza, the poet draws our attention to the powerful creation of several artists, and out to a fabulous story we fashion an empire's glory. A story writer, or you can say an artist, can fabulously give shape to an empire and its glory through his writings. One man with a dream at pleasure shall go forth and conquer a crown, and three with a new song's measure can trample an empire down. Here, with the help of these writings, a writer can give man liberty to dream at pleasure. Here, the poet is suggesting that through his writings, a writer can give man the liberty to dream at pleasure and to move forward to conquer a crown to be a king. At the same time, a songwriter or an artist can give another man the freedom to bring about a revolution and bring the downfall of an empire. We can simply say that a writer or an artist is so powerful that if he wants, he can make a person king, or if he wants, he can make a person to demolish an entire empire. अगर हिंदी में बात करें तो जो आर्टिस्ट होता है उनके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी शहरों को बना सकते हैं। जो राइटिंग्स होती हैं राइटर्स की, वो एक एम्पायर को बिल्कुल सेव कर सकते हैं। मतलब जो राइटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी आर्ट एक पूरे राज्य को स्थापित कर सकती है। जो आर्टिस्ट हैं उनकी आर्ट किसी एक इंसान को इतनी ताकत दे सकती है कि वो राजा बन जाए, और उसी टाइम पे जो आर्ट है वो किसी एक बंदे को इतनी ताकत दे सकती है कि वो पूरी एम्पायर को धराशायी कर दे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे। मतलब आर्टिस्ट के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो अपनी आर्ट से किसी को भी राजा बना सकते हैं और किसी भी एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Let us move to the last stanza. We in the ages lying in the buried past of the earth built Nineveh with our sighing and Babel itself with our mirth, and overthrew them with prophesying to the old of the new world's worth. For each age is a dream that is dying, or one that is coming to birth. Here the poet now alludes to biblical cities of Nineveh and Babel, suggesting the idea of art as an almost divine creation that in itself creates divinity. Nineveh was the ancient flourishing capital of Assyrian Empire which came to ruins and was never rebuilt. The people of Babel sought to make a tower so high that it would reach to the heavens. It is believed that since humans wanted to claim equality with the god by building a tall, proud symbol of their unity and strength, God punished them by giving them different languages. It was done so that people could not communicate with one another and would not be able to build the tower. The poet believes that in the ancient times that now lie hidden in the history of the earth, when the artists were distressed, they built a Nineveh, and when they were filled with joy, they rose up a Babel. Here you can see it is saying sighing. Here you can see it is saying sighing. So when they were distressed,
When the artists were distressed, they built a Nainwa, and when with our mirth is basically means joy, and when they feel joyful, they make the Tower of Babel. Nainwa and Babel are symbols of human rise and subsequent falls. They reflect the artist's power to create and destroy the same piece of art. The utopia of the old world is then deconstructed by professing the new world's worth. It is only an artist, a magician, a painter, a poet, and a writer who can create something only to destroy it for a better and worthy future. Thus, dreams and aspirations die in each era so that new one can come to life. देखिए आखिरी स्टेंजा में पोएट हमारा ध्यान बाइबल की कुछ सिटीज की तरफ लेके जाता है, नाइनवा और बाबेल। नाइनवा एक सिटी थी जो धराशायी हो गई थी और उसको दोबारा कभी नहीं बनाया गया। मतलब नाइनवा एक सिटी थी इराक में जो अर्थक्वेक की वजह से बिल्कुल तबाह हो गई थी, उसको कभी दोबारा बनाया ही नहीं गया। और जो बाबेल था वहां पे बाबेल के जो लोग थे वो एक इतना ऊंचा टावर बनाना चाहते थे कि जो भगवान तक पहुंचे, वो भगवान के बराबर होना चाहते थे। और वो खुशी खुशी टावर बना रहे थे, सबकी लैंग्वेज सेम थी। तो भगवान ने उनको पनिशमेंट देने के लिए उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस दे दी और वो टावर कभी बना ही नहीं। और यहाँ पे पोएट ये सजेस्ट करना चाह रहा है कि जो आर्टिस्ट होते हैं जब वो दुखी और पेंसिव मूड में होते हैं, जब वो डिस्ट्रेस होते हैं तो वो नाइनवा बना देते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो वो बाबेल बना देते हैं। और जो आर्टिस्ट होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो अपनी किसी एक आर्ट को बना भी सकते हैं और उसी एक आर्ट को तबाह भी कर सकते हैं, ताकि जो फ्यूचर है वो थोड़ा और ब्राइट हो। मतलब जो ड्रीम्स और जो एस्पिरेशंस हैं आर्टिस्ट की वो ना मरे, क्योंकि जो ड्रीम है वो कभी मरती नहीं है, वो केवल अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। सो आई होप यू ऑल गॉट द पॉइंट। थैंक यू।